Ashmi, can you just confirm, am I audible and visible? You're audible and visible. Okay, we shall start with the session. Welcome everyone to Credence Wealth webinar on politics and portfolio, the interplay of government policies and investment strategies. It has been historically proven that politics has an impact on country's economic situation. Therefore, it directly affects the stock market and obviously our portfolios. There are many decisions that might prove beneficial or detrimental. For example, regulatory decisions, fiscal policies, monetary policies, trade policies, government spending, and much more. All these decisions affect the stock market as the market predicts what decision the upcoming government will take. Understanding the political landscape and how it intersects with economic policies and global event is crucial for investors to make informed decisions about their stock portfolios. And this is where the role of a fund manager comes in. Their job is to predict those changes and take timely actions needed for their portfolios. One such political event is going to take place in India this year. Therefore, in this presentation, we will understand how this event and other such political events might affect our portfolios. Today, our esteemed speaker, Mr. Karthik Mehta, he holds an engineering degree and a master's in finance. With 19 years of experience in equity markets and research, he always believes in balancing between the top-down and bottom-up approaches and never compromises on the risk management and has consistently delivered excellent return for our investors. Over to you, sir. Thank you, Yashvi. Good morning, everyone. Thanks a lot for taking your time out, especially during the on holiday like Sunday. So, without wasting time, let me just start the screen sharing. This is visible, Ashmi? Yes, sir. Okay, thank you. So, as Yashvi has explained, today's topic, politics and portfolio, the interplay of government policies and investment strategies. So, आज का ये जो टॉपिक है हमने इसलिए सिलेक्ट किया है ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्शंस आर गोइंग ऑन एंड दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर मार्केट एज वेल. तो एज ए इन्वेस्टर आपको इससे क्या सीख मिलती है, क्या समझना होता है, उससे आप कैसे डील कर सकते हैं अंडर डिफरेंट सिनारियोस. एज अ फंड मैनेजर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, एज एट पोर्टफोलियो लेवल पे हम कैसे काम करते हैं और किस तरह से हम नेविगेट करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, दिस गोज हैंड इन हैंड. एक्चुअली आप देखिए ना, तो पॉलिटिशियंस कैन ईट इकोनॉमी फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. उनकी ताकत है कि वो इकोनॉमी को विद इन फ्यू ईयर्स कोलैप्स कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. So policy making has a long-lasting impact on economic growth and vice versa. The ideal policy should be keeping a fine balance between social responsibility और economic development both. तो आप देखिए कि कोई भी एक बाजू ज्यादा स्विंग होता है, too much of social responsibility leads to economic development, वो नहीं होता है. मतलब it is like, either you do both the things in gradual calibrated manner, or if you focus on too much on one side, then the other side will be impacted. So ideally दोनों को फोकस करना चाहिए, बट उसके लिए आपको समझना चाहिए कि कैसे अभी पिछले सालों में इकोनॉमी में क्या बदलाव आया है और क्या हो सकता है. सो number 1 point over here is that just
what is prudent government policy? The focus should be on fiscal discipline without compromising growth. तो एक है कि आपका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है जीडीपी का, दूसरी बाजू आपका जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो क्वालिटेटिव होता है, उससे आपकी फिस्कल डेफिसिट या इंटरेस्ट रेट या गवर्नमेंट बोरिंग बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है, सब बैलेंस होता है। तो एक हमने 4 पॉइंट में उसको समराइज किया है। द आइडियल गवर्नमेंट पॉलिसी शुड लीड टू इंप्रूविंग टैक्स कलेक्शन, दैट इज हायर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो अभी हो रहा है, रिड्यूसिंग सब्सिडीज मोर सो ऑन ऑयल एंड फर्टिलाइजर, बिकॉज जो फूड सब्सिडी है या तो फिर जो सोशल सब्सिडीज है वो कंटिन्यू रखनी पड़ती है और रखनी भी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Stimulating private capital expenditure and consumption by way of increasing government capex to GDP ratio, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स तभी आता है जब गवर्नमेंट एक बार कैपेक्स करके एक स्टिमुलेशन लेके आता है, उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स रोल इन होना चालू हो जाता है, जो अभी हो रहा है। एंड कंट्रोलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट which will ultimately keep the currency rate in check and controlling inflation. Thus, it will probably, help you overall, because higher interest rate is not good for the overall economy. तो inflation control करके interest rate को control करना है। तो ये 4 पॉइंट में ideally कोई भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अभी आप देखिए स्क्रीन के ऊपर जो गवर्नमेंट का अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो रूरल स्पेंडिंग है, दैट हैज बीन वीक फॉर द 4th straight year, एंड दिस इज फॉर द FY25 इज अ बजटेड एस्टिमेट एंड FY24 इज अ रिवाइज एस्टिमेट, जो अभी का बजट आया ना फरवरी में, उसका डेटा है। सो क्लियरली कोविड के बाद गवर्नमेंट ने ये एक्सपेंडिचर को सब्सटेंशियली रैंप अप किया था, दैट इज 2021, बिकॉज देयर वाज अ नीड ऑफ द टाइम, then they had to cut it down to maintain it to the normal level. So यहाँ पे फोकस गवर्नमेंट का ज्यादा हुआ है क्वालिटेटिव थ्रस्ट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जो पहले 2020 में 12% था, वो इंक्रीज हो गया 23% हुआ है। एंड कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम 1.6% टू ऑल टाइम हाई 3.4% पे आया है। सो दिस इज वन पॉइंट जो हमने आगे डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट है। That has led to not only the center capex, but state capex has also picked up, and ultimately it has stimulated the private capex. So the private capex का number आप देखो जो 5.2, 5.3, 6.3, 5.5, 5.5 पे अटका हुआ था, it has finally, come out significantly, and it is now 8.5. So that clearly shows that the corporate India has also started picking up the capex. And this is the slide for that. अभी इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कि कैपेक्स सब्सटेंशियली बढ़ सकता है, बिकॉज कैपेक्स टू डेप्रिसिएशन एक नंबर है, वो रेशियो 2 डिकेड लो पे है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट में अभी बहुत ज्यादा कंफर्ट है एंड दे कैन डू अ सब्सटेंशियल कैपेक्स। और 2007-8 में वो रेशियो पिक आउट हो गया था। सो आइडियली 2001-2 से लेके 7-8 तक जो मैसिव कैपेक्स हुआ ना, उसके बाद वहां से वो रिवर्सल चालू हुआ, अगेन वी आर बैक टू 2001-2-3 लेवल। सो इट्स अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर कॉर्पोरेट्स टू डू कैपेक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपेक्स का नंबर देखिए तो वो भी बहुत सब्सटेंशियली मतलब 2 डिकेड्स हाई पे है। और यहाँ से दे कंपनीज कैन डू अ सब्सटेंशियली हाई कैपेक्स, जो 2001-2 में एकदम हाई पे था, वहां से 2007-8 तक बिकॉज हैवी कैपेक्स हुआ तो नेगेटिव में चला गया था, एंड अगेन इट हैज कम बैक टू द लेवल ऑफ 2। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन पिछले 8-10 साल में विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसे इंप्रूव हुआ है। एंड आप देखिए तो टैक्स टू कलेक्शन और दैट नेट प्रॉफिट टू जीडीपी नंबर हैज आल्सो रीच टू द क्लोज टू 5% लेवल। ROE जो कॉर्पोरेट इंडिया का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज एंटरिंग इनटू वैल्यू क्रिएशन जोन, दैट इज अनदर पॉजिटिव साइन। एंड जो एक इंडस्ट्री लोन है वो भी आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज लुकिंग एट अ रिवाइवल। एंड उसका आप देखो तो 2009 से 2012 में अनसस्टेनेबल क्रेडिट बूम था, 2012-13 से लेके 2020 तक वो बैलेंस शीट रिपेयर हुआ, और 2020-21 से लेके अभी वो वापस लैंडिंग रिज्यूम हुआ है। एंड अपना जो जैसे हमने आगे बताया था कि अपना पर कैपिटा इनकम अभी जो चाइना का 2003-4 का लेवल था उसी लेवल पे है, इसीलिए
उसी तरह से हमारा जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है in constant US dollar term, it is also at the same level what China was in 2002-3. So not only in the consumption side, but also on a capital expenditure side, as a country, we are exactly standing at the same time where China was in 2002-3. So सारे फैक्टर्स कंड्यूसिव हैं और इसकी वजह से जो सर्कल में आपको आगे भी बताया था कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड आता है, स्केलेबिलिटी बिजनेस में दिखता है, उससे इन्वेस्टमेंट प्रमोट होता है और मैन्युफैक्चरिंग आता है, नई जॉब्स क्रिएट होती है, इससे और कंजम्पशन बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो ये जो सर्कल था वो साइकिल एक कंप्लीट होना चालू हो गया है। एंड फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखो तो इट इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन पोस्ट कोविड, इट इज नाउ projected to go to 5.1 and government borrowing is consistently under control. अगर गवर्नमेंट बोरो कम करती है तो कैपिटल जो फ्री रहती है वो सिस्टम में वो प्राइवेट सेक्टर्स को अवेलेबल सस्ते दाम में मिलता है। अगर गवर्नमेंट का बोरोइंग ज्यादा होता है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट ज्यादा करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कंट्रोल नहीं करती है, गवर्नमेंट जुडिशियस स्पेंडिंग नहीं करती है, तो अल्टीमेटली वो स्पेंडिंग का जो डेफिसिट आता है, जो उसको शॉर्टकमिंग्स को कवर करने के लिए जो बोरो करते हैं गवर्नमेंट, अल्टीमेटली सिस्टम में से पैसा मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर को कैपेक्स करने के लिए या लोन चाहिए जो भी है एक्सपेंशन के लिए वो पैसे कम मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ऊपर जाते हैं, तो वो जो है पूरा यहाँ पे कंट्रोल में दिख रहा है। And if you also look at the subsidy numbers, they are consistently under control. They are close to 3.8 trillion. And this is a final summary that as a percentage of GDP, आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज प्रेटी मच अंडर कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट इज कंसिस्टेंटली फॉलिंग डाउन। So this is a very nice improvement in the macro picture. Now, if you look at the economic data, two-wheeler growth, petrol consumption, diesel consumption, manufacturing, services sector PMI, GST collection number, non-food credit growth, फोर्टनाइटली नंबर जो है मंथ वाइज 20% के ऊपर आ रहा है, पावर डिमांड एंड योर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर. So any number above 50 is considered as expansion of the economy or activities, and below 50 is indicating a contraction. So यहाँ पे हम consistently ये नंबर 55 के ऊपर ही लेके आ रहा है मोर और लेस. सिमिलरली सर्विसेज में तो हम क्लोज टू 60 पे हैं. सो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी रोबस्ट है. Put the different scenarios for the election outcome. Whichever scenario plays out, eventually market will move based upon earnings outcome and margin of safety. एक चीज तो आपको और मुझे अच्छे से मालूम है कि इलेक्शन में कुछ भी होता है वो उसका इम्पैक्ट 1, 2 या 3 या मैक्सिमम एक हफ्ते, 1, 2 दिन, 3 दिन या फिर मैक्सिमम 1 वीक तक रहता है. Eventually market starts looking at the final thing, that is earnings and margin of safety, available risk reward, and the composition of the market, the winners and leaders of the market changes obviously, and you will have to realign your portfolio strategy as per the new need of the market. So we have to continuously keep listening the market requirements and market thought process and what market is suggesting, and adjust your portfolio accordingly. हमने देखा है पास्ट में कि कोई सा भी गवर्नमेंट होता है मार्केट में पैसा बना है. सो बेस्ड अपॉन सिंपल आउटकम ऑफ वट एवर आउटकम कम्स आउट, यू शुड नॉट बी टेकिंग अ इम्पल्सिव डिसीजन, बिकॉज जब 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन वाजपेयी का जबरदस्त चल रहा था, एंड इट वॉज वेरी वेरी clear that the government is going to be repeated, but surprisingly the UPA part 1 came, and that too with the leftist support, who are known for a very very different socio-economic related policies, and market thought that कि यहाँ से अभी reforms backstage पे हो गए, और people sold metal, infra, capital goods, real estate, power, so and so forth. But the maximum money actually got created in those sectors between 2003-4 to 2007-8. Similarly, 2009 में UPA2 repeat हुआ, but it was without left party support, and then people realized that कि अभी lefties का नहीं है support, तो यहाँ से अभी reforms और aggressive आएंगे, and people actually loaded the capital goods, real estate, infra, power market में ऊपर सर्किट लगा था, 2004 में लोअर सर्किट लगा था, 2009 में ऊपर सर्किट लगा था.
और वो सारे सेक्टर्स लोगों ने लिए कि अभी बहुत अच्छा होगा। और ऑन द कॉन्ट्रारी जो पैसा बना वो आपका फार्मा, कंज्यूमर और आईटी में पैसा बना। सो नेचुरली जो हम और आप सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। यू हैव टू लिसन टू द मार्केट एंड रीअलाइन द स्ट्रेटेजी as per the need of the time. So this is just one brush up of the memory that आपको वो हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या हुआ था एक्चुअल में। So scenario 1, NDA gets a thumping majority, 380 to 400 plus seats. The bold reforms should be definitely there as promised by the present government. We really don't know the exact economic impact because it is not known to any one of us, and it has to be seen on actual basis. And most of the current market themes will continue to fetch a lot of attention along with sustainable valuation of overall market subject to global stability. That is number one scenario. Number two scenario, NDA will get close to 310 to 340, 50 seats. So Modi 3.0 should be as good as Modi 2.0. However, government will still try to pursue those bold reforms as promised above 380, 400 seats, but with some roadblock at the parliament level. Now, this is just a slight detail analysis state-wise. I want you to pay attention on the left side, the pie chart. North, West and Central are 55% of your total seat count of 540 seats. South is 24%. Odisha, West Bengal is 12%, and others, which includes your Northeast and Andaman, Nicobar, so and so forth. Central Territory and Union Territory is 9%. So actually, winning ratio of the NDA government in 2019 was close to greater than 80% in the 55% of the seats. Now we have divided that into two parts. So states where more than 80% winning ratio was actually 61% for the NDA. So 55 actually North, West and Central, and South में से कर्नाटका इसमें add हो गया है. And there were 39% of the seat where the winning ratio was much lesser. Now, if you look at again on your left hand side, the states with a winning ratio of more than 90%. So उसमें 174 सीट्स थी, उसमें से एनडीए को 170 सीट्स मिले थे. इट्स अ फिनोमिनल 97.7% विनिंग रेशियो. जैसे बिहार में 40 में से 39 सीट्स मिले थे लास्ट टाइम. गुजरात ऑब्वियसली 26 में से 26, हरियाणा 10 में से 10, हिमाचल 4 में से 4. सो लाइकवाइज सो एंड सो फोर्थ. सो राजस्थान 25 में से 25, दिल्ली 7 में से 7, उत्तराखंड 5 में से 5. सो इट वाज अ फिनोमिनल सक्सेस रेट in that states, which is 33% of the seat count. Now the 28% of the seat count जो states है उसमें 153 seats होती है, उसमें से बीजेपी won 126. BJP, when I say including NDA alliance. So 126, so again a 82.4% winning ratio. So Maharashtra was 41 out of 48. UP was 64 out of 80. Jharkhand was 12 out of 14. And Chandigarh was, Chhattisgarh was 9 out of 11. So again, a very significant winning ratio. And the other states where, the winning ratio was much less, was 39% of the seat count. Now, the region-wise bifurcation, as I said, so the South, which contributes 24% of the total seats, have been predominantly very weak, with a winning ratio of just 24%, that is 31 seats. And majority of that also came from Karnataka. So already we have had a first phase of election of 102 seats. उसमें last time NDA 43 seats जीता था, मतलब of these 102 seats. So this time it is required to be seen that how it is going to play out. The pundits are talking about the political pundits or the media or what you follow, because we don't go on ground, we don't check at the grassroots level. That's not our job, and we actually can't do it. But whatever we are reading, there has been some success likely to come, but we can't trust anybody, because ultimately it's all about politics.
And the last state elections, nobody was talking about BJP winning all the 3 states, and actually it delivered a phenomenal success. So it is very, very difficult to predict the political outcome, and Janta Janardhan is obviously supreme. So let's hope for the best. Whatever outcome is there, market is likely to navigate as per the need of the time. So, my only point was that the anti-incumbency generally comes after the longer tenure of the present government. So we already had a 10 good years, and out of 174, you had 170 winning in the states, which is 33% seat count, 28% seat count. Out of 153, you had 126 seats already won. So you have to keep that in mind as well. The scenario 3, NDA gets 270 to 300 seats. This shows a higher level of anti-incumbency, which might lead to change in current stance of the government towards economic growth with fiscal prudence. There might be, it's just a thought that they might probably have to look at the social side as well aggressively under that outcome. Also, political permutation and combination will actually drive the market sentiments. The type of alliance will drive the market sentiments. And the market winners should narrow down compared to the first 2 scenarios, and overall valuation multiple might see some sort of a red flags. So, in the first scenario, the thumping victory, even the second scenario, 340, 350, whatever, is likely to have a probably continuation of the same market composition. But when it comes to the narrow down of the victory, the market composition would also change. And the last outcome is NDA losing the election. That shows a very high level of anti-incumbency, and new government will be formed with totally different agenda as explained in their manifesto. However, I'm telling you, the manifestos are manifesto. The reality is quite different. The practical implementation is far, far, far different than what is generally being discussed in the manifesto. So it's just a symbolic most of the time. Let's see. Market after initial setbacks will reverse and will move purely on the basis of merits, that is business strength and valuation with lots of deliberation. Sectors such as, let's say, IT, pharma, consumer staples, discretionary, private banks, NBFCs, chemical, that should be chased by the market participants initially, and later on based upon government actual policies, and eventually the new winners will emerge. So this is just a knee-jerk reaction and the initial thought process of the market participants, but eventually you never know. Ultimately, new governments, whatever policies are there, the new winners will emerge accordingly. Now, this is, I just wanted to explain you that these are the 4 scenarios, how market is likely to behave. So one thing is very sure, market will get excited, but eventually earnings will take in the case of BJP winning substantially, market will get excited, but eventually the earnings and global situation will drive the markets, irrespective of BJP को 400 सीट मिलता है, 425 सीट मिलता है या 350 सीट मिलता है. दूसरा सिनेरियो है जहां पे एक्चुअली कम सीट मिलता है या तो लूज होता है, तो भी अल्टीमेटली आफ्टर इनिशियल रिएक्शन मार्केट विल ओनली लुक एट द अर्निंग्स. सो दोनों सिनेरियो में अल्टीमेटली मार्केट अर्निंग्स को देखेगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखेगा. स्टाइल, कंपोजिशन, वो सब बदलता रहता है, एंड दैट इज द टास्क ऑफ द फंड मैनेजर टू डू दैट. सो जब भी आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है इलेक्शन वाले दिनों में और आपको लगता है कि मार्केट अच्छे लेवल पे आ गए, आई एम urging you and requesting you that instead of taking an impulsive decision of taking money out or doing a profit booking, या तो ब्रेक लगा रहे हो अपने थॉट्स पे, तो go against the train, push the pedal and invest aggressively, because इंडियन मार्केट की अपनी एक इनहेरिटेंट स्ट्रेंथ है. और हमारे मार्केट में कहावत है कि our markets have grown despite of politics. तो इतने सालों से पॉलिटिक्स आगे पीछे हो रहा है और मार्केट हैज हैड इट्स ओन चार्म एंड मार्केट हैज क्रिएटेड इट्स ओन रिटर्न्स. सो जब भी हम रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो हमको यही लगता है कि हमने ये मार्केट में पैसा क्यों नहीं डाला, या तो फिर हमने ये लेवल पे पैसा क्यों निकाल लिया. कभी भी हमको बने रहने में या इन्वेस्टेड रहने में रिग्रेट नहीं होता है. सो या दैट्स ऑल. नाउ व्हाई अस
It's very clear that we are not constrained by a particular style like value or growth, or, we only look at the earnings. We only look at what market is trying to tell us. We respect risk versus return metrics very carefully. We don't chase the return. We are very, very agile, nimble footed, flexible. And, this is what is there in front of you, number of winners and losers. So पिछले 12 महीने का average number is 71%. So 71% of the portfolio constituents have actually generated return higher than the benchmark return for them. For us, they are winners, and the weights which have underperformed the benchmark, for us, they are losers. So that's a very healthy number. We believe in a consistent alpha generation, net of fees and charges. That is a very simple underlying thought process. Chahe koi sa bhi government ho, koi sa bhi market cycle ho. This is the core belief what we carry. And it is there in front of you that the 100 rupees invested since inception would have grown to 161 for all weather and 177 for diversified versus 141 and 154 for the respective market indices. We have a well-established performance track record, and we will see that. Now, this is, my team has just highlighted me. The PMS AIF World magazine or the platform, they gave actually last year, we were in top 10. In our two investment approach, all weather and diversified, were in top 10 performers for FY 22-23 in 1 year plus category. Now we are more than 2 years old. So in FY 23-24, again, we are in top 10 for all weather and diversified fund under the PMS AIF World ranking. So it's a very good achievement. And the PMS Bazaar is another platform which tracks the variety of the PMS schemes. Both our investment approach, all weather and diversified, are in top 5 in FlexiCap category for 2 years plus return as on 31st March 2024. So again, a phenomenal success, but we are not carried away by that. Past is past. We have to look at the future, and we are very much committed to continue doing the best in the interest of our clients. So all-weather investment approach, this is the return in front of you, the last 12 months as on 31st March. Congratulations to all our clients. This is the scheme level TWRR return of close to 48%, 47.97 rounding off, versus 40%, 40.16% for BSE 500 and 28.61 for Nifty. For the last 24 months, again, a significant outperformance. And since inception, it is also a very good number. And these are net of fees and charges. Scheme level TWRR return, the portfolio level performance might be different. These are the top holdings, top 10 holdings of the fund. We have very recently entered into the gold through the ETF because we thought so. And we also have recently bought post 31st March. We also have bought silver ETF. So together, gold and silver are close to 8.5% of the portfolio. This is the portfolio mix. Around 46% is into pure large cap. Small cap is 37-38%. ETF, which is predominantly gold, mid cap, cash, and sectorial breakup is there in front of you. It's a well-diversified portfolio. Now, diversified fund, if you look at, again, congratulations to all the investors for keeping, and thank you very much for keeping faith. So the last 12-month performance is close to 55%. The benchmark is 40. Nifty is 28.61. 2 years, again, phenomenal outperformance. And since inception, again, a significant outperformance. These are, again, a net of fees and charges. And the scheme level TWRR return, individual returns might be different. But when you report the scheme level number, it captures almost everything. So this is a significant outperformance. These are the top 10 holdings of the current fund, which is there for all of you to look at. And I'm sure you would have also access to the portfolio, so you can always scan it in detail. Large cap is now
close to 46.37. Here there is no precious metal and the cash level is 9.35. It's again a well diversified portfolio for you to look at. Now this is very important for all of us. The 100 rupees invested, as I said, would have grown to 154 for BSE 500 TRI, 141.86 for Nifty. For mid cap 100, it is 176. For small cap, it is 157. All weather is actually 161.5 and diversified is 177. So हमारे all weather fund ने, despite of owning 45, 40, 50% large cap, pure small cap index return को beat किया है, net of fees and charges. Diversified fund ने, despite of owning 40, 45, 50% large cap, pure small and mid cap return दोनों को beat किया है, net of fees and charges. So again, a very tall task we have achieved because that speaks about the quality of the portfolio and the lesser risk, better return sort of a portfolio. आप लोगों को हमारा एक कम्युनिकेशन आता है, उसमें हमने ईमेल में इस बार सारे क्वालिटेटिव रेशियोज जो होते हैं वो हमने पब्लिश किए हुए हमारे फंड के कैलकुलेट करके. तो रिस्क कितना लिया है हमने, उसके सामने कितना रिटर्न जनरेट किया है. तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलो या फिर दूसरे भी बहुत सारे रेशियोज हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हमने भेजा है. तो वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एंड हाउ good is the quality of the portfolio versus the risk we take. So सिर्फ रिटर्न चेस करने से कुछ नहीं होता है. Despite of taking relatively lesser risk, अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न लेके आते हैं and still you are beating the benchmark handsomely net of fees and charges, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए. And we want to do that continuously. Business cycle fund, as we have highlighted it earlier, it's a market cap agnostic fund. 20 to 35 stock count, higher sector allocation could be as high as 40%. बेंचमार्क एग्नोस्टिक एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोडक्ट है, जिसमें बेंचमार्क्स में क्या है कंपोजिशन उससे कुछ लेना देना नहीं है. ये फोकस करता है ऐसे बिजनेसेस और सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को जो आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छा कर सकते हैं. पिछले 1-2 साल में बहुत अंडर परफॉर्म किया है, अभी साइकिल टर्न अराउंड होने को दिख रहा है. So it's a play on migration from disbelief to belief, and it's a mix of top down and bottom up approach. The risk factor is relatively higher compared to rest of the two funds. Returns are very non-linear and high single sector exposure is high. Now, if you see, it's a very young baby. Just we launched on 10th of November. The performance of the fund, though it's a benchmark agnostic, but as a under regulation, we have to keep the benchmark. So compared to benchmark, it has underperformed for a very short window. But let me tell you one thing, this is a scheme level TWRR return. So those who have given us money initially, the returns are far different, but we never want to highlight that. We always highlight the scheme level numbers. At the same time, as I said, this is an absolute return product, long-term thought process oriented, but still the April month has been far better. It has generated significant alpha, and whatever underperformance you are seeing on screen is actually reverse in the month of April. So that is why I always urge and insist and request all of you that don't compare it with the benchmark, because the composition of the portfolio is far different, and you will only have to look at the absolute return and give it a 3 years horizon. So बहुत इसका अप्रैल में significant recovery आया है compared to benchmark, and पूरा underperformance recover हो गया है. इसके top 5 holdings आपके सामने हैं. Nothing significantly different. इसमें churn भी relatively कम है. इसमें large cap less है, small cap बहुत ज्यादा है, because जो theme हमको पसंद है, हमारा 3 साल का horizon है, हमको लगता है वो business cycle turn around हो रहा है, तो we are playing aggressively. And this is what the composition. So pharma is pretty heavy, followed by information technology, banking and finance, chemical, auto, oil and gas, likewise. अभी पिछले फरवरी में जो हमारा पोर्टफोलियो था और मार्च में क्या है वो हमको बताते हैं आपको. तो फरवरी में इफ यू सी, दिस इज अ ब्लू बार, ऑल वेदर फंड लेफ्ट हैंड साइड में. तो ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर वाज 34, द कैश लेवल वाज 18. तो विद कैश द लार्ज कैप वाज मोर देन 50.
So now the large cap exposure has increased from 34 to 46. The mid and small cap exposure has reduced from 48 to 41. The cash has been deployed in the month of March during the correction. There was no exposure to gold ETF, which we have taken to 7%. In the case of diversified fund, the large cap was 31, cash was 21, and it was at the end of the February, because somehow we felt that we might get the opportunity in the month of March, which we actually could leverage that, and we deployed the fund during the March. The cash level has reduced to 10%. The large cap has increased to 46%, and mid and small cap has reduced from 48 to 44. So yeah, so that's how the composition has slightly tilted, and this is a notable change. That's why we are highlighting in this webinar. Otherwise, it generally हमारा बहुत ज़्यादा market cap mix में change होता नहीं है, but we have done that purposely ahead of the election. So अभी आपके सामने हमारा portfolio में किस तरह से हो सकता है वो हम रख रहे हैं. So we have divided the portfolio into 3 parts, namely politically exposed stocks in the portfolio, politically less exposed stocks in the portfolio, or politically immune stock in the portfolio. When I say immune, उनका business government policies से ऊपर dependent नहीं है, उनके business में government policies का बहुत major role नहीं होता है. उनके अपने रिस्पेक्टर बिजनेस के होते हैं वो अलग है, लेकिन उनको गवर्नमेंट से इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. बट दैट डजंट मीन दैट पॉलिटिकली इम्यून पोर्टफोलियो है तो इलेक्शन के दिन एडवर्स आउटकम आता है, आउटकम आता है, सॉरी, तो वो नहीं गिरेगा. गिरता सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली वो ज्यादा रिकवर करता है, और उसका रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कम होता है और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होता है. However, whatever sector of stocks we have selected based upon the later one, that is, purely on the basis of merits for the earning potential and valuation comfort and nothing else. So ऐसा मत सोचिए कि हमने politically immune portfolio बनाने की कोशिश की है before election. No, not like that. Only thing is that we have done little bit of risk management, but जो भी stocks और companies या sectors हमने select किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा thought process गया है वैल्यूएशन कंफर्ट पे और अर्निंग पोटेंशियल्स पे, कि उसके अर्निंग्स कैसे आएंगे, ग्रोथ कैसे आएगा. सो इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाइज हम देखते हैं ऑल वेदर में 58% ऑफ द पोर्टफोलियो इसमें इम्यून कैटेगरी में आता है, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर एंड कैश लेवल भी आ जाते हैं. पार्शियली एक्सपोज 15% ऑफ द पोर्टफोलियो हमारा पार्शियली एक्सपोज है, जिसका कुछ बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड 27% ऑफ द पोर्टफोलियो इज पॉलिटिकली एक्सपोज, जिसमें प्रिडोमिनेंटली कुछ ऐसे बिजनेस है जिसका तो डायरेक्ट एक्सपोजर है, लाइक PSUs एज वेल एज फ्यू अदर बिजनेसेस. डाइवर्सिफाइड में वही नंबर 50% इम्यून कैटेगरी में है, पार्शियली एक्सपोज इज 20% एंड टोटली एक्सपोज इज 30%. इन अ बिजनेस साइकिल फंड इम्यून कैटेगरी 68%, partially exposed is 11%, and totally exposed is 21%. So, we thought to highlight all these things in front of you. Generally हम ऐसा करते हैं, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी लोगों में हमको काफी क्लाइंट्स की क्वेरी आई थी कि इलेक्शन के लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड हो, आप पोर्टफोलियो में क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हो. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक इट इन अ नाइस वे एंड बाइफरकेट एंड गिव इट in a simpler format to all our clients and showcase them and make them aware and understand कि हमारा क्या preparedness है. And we are very sure that जो भी हम कर रहे हैं उसमें eventually उस दिन का, उस टाइम का जो outcome होगा उसके basis पे judgment होगा. But one thing is very clear to me, I'm telling you with my experience, that election is just a matter of few weeks or few days outcome, and then it will be business as usual. So grab the opportunity if you get it. Yeah, that's final thing. I'm skipping these slides on SIP because I have told you earlier. We take the SIPs into PMS, and we encourage all of you to do that, because then your saving ratio will be far different. Okay, let me highlight it because there are a few new faces. So if you give me, let's say, 1 crore as a lump sum, and assumption is that 17% is the expected rate of return. There is no guarantee. It is just a hypothetical assumption. And expected inflation is 7%. So 10 years down the line, 1 crore will become 4.8.
20 years down the line, it will be 23, and 30 years down the line, 111 crore. But inflation adjusted number 2.44, 6 and 14.6 होता है. That means कि आज आप जो 14 करोड़ रुपए से कोई चीजें खरीद सकते हो, वही सेम चीजें खरीदने के लिए 30 years down the line आपको 111 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी. Now, if you do the SIP, 2 lakh rupees per month, very simple SIP over 1 crore. So 2 lakh per month माने 24 लाख आपने किया, which is roughly 24% of the initial investment. So 10 years down the line आप 3.4 crore rupees का total investment करोगे, 1 crore upfront and 2.4 crore over the period of 10 years. 20 years down the line 5.8 crore का investment करोगे, 30 years down the line 8.2 करोड़ का करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू 11.6, 69 and 380 होती है. So it's a phenomenal increase in the wealth. Now let's look at the silent enemy impact, that is inflation. So the 10 years down the line, the inflation adjusted figure is 6, which is still better than 20 years down the line without SIP inflation adjusted figure 6. So जो आप without SIP 20 साल में 6 करोड़ पे पहुंचते थे इन्फ्लेशन एडजस्टेड, वो 10 साल में आप 6 करोड़ पे पहुंच जाते हैं. 20 years down the line वो नंबर 18 होता है, एंड 30 years down the line वो नंबर 50 करोड़ होता है. So हमारा यही सजेशन है कि don't just give one time, also make a habit of doing the regular investments. SIP is the best thing because you don't time it, but if you want to time, just look at the market nervousness and grab the opportunity. So now we have revised our earning estimates for FY25 and 26, and this number I am telling you will again go upward because जो अभी का अर्निंग मोमेंटम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है. 1050 EPS for FY25 and 1155 EPS for FY26. So assuming 18 and 22 times P multiple, that's a range generally market follows. सस्टेनेबली वो 22 के ऊपर फिर ज्यादा टिकता नहीं है. वो बात जरूर है कि 23-24 तक भी जाता है, कभी कभी 28 तक भी गया है, लेकिन वो कभी ज्यादा टिका नहीं है. सिमिलरली एबनॉर्मल सिचुएशन है तो ही 18 के नीचे वो थोड़ा टाइम के लिए टिकता है. सो बेस्ड अपॉन दैट एंड माइंड यू FY25 का जो नंबर है आफ्टर जून जुलाई अगस्त लोग FY26 को टोटल डिस्काउंट करना चालू करेंगे. एंड अवर मार्केट इज ऑलवेज लाइक दैट. हमारा मार्केट कभी इमीडिएट ईयर अर्निंग्स के बेसिस पे ल्यूक्रेटिव लगा ही नहीं है. तो आपको अगर दिखता होगा कि 18,900 नीचे का लेवल है और 23,100 ऊपर का लेवल है, तो अपसाइड तो कुछ बचा नहीं है मार्केट में. बट अवर मार्केट इज ऑलवेज लाइक दैट. डोंट लुक एट द इमीडिएट FY24 इज ओवर, FY25 अभी चालू होगा और उसका फर्स्ट क्वार्टर अभी चालू होगा. तो उसका नंबर पे कभी भी मार्केट को नहीं देखना चाहिए. वी हैव टू लुक एट द 1 year फॉरवर्ड ऑफ दैट. सो दैट इज 20,800 लोअर लेवल आता है और 25,410 ऊपर का लेवल आता है. तो यहाँ पे अभी बीच में अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है और 20,800, 20,500, 20,200, 21,000 जो भी लेवल आपको दिखता है वहां पे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पैसा डालने का, अगर आता है तो. there is no guarantee and nobody can predict it. We can only put the scenarios. Now this 1155 number can actually go upwards of close to 1180 or even 1190. तो ये जो आपका रेंज है वो 6-8 months डाउन द लाइन ऊपर हो जाएगा. 20,800 वाला 21,800 के ऊपर चला जाएगा और 25,400 वाला 26,000-27,000 के ऊपर जाएगा. सो दैट इंडिकेट्स दैट मार्केट इज बाय ऑन डिप्स मार्केट एज ऑफ नाउ. predominantly sector wise, capital goods, pharma and healthcare, auto ancillary, BFSI, metal is looking very good. IT numbers are not that great. TCS is good. Infosys is relatively disappointment. Wipro is also disappointment. FY25 IT numbers are almost washed out based upon the guidance, but FY26 onwards the number would start looking very good on a very low base. And overall per se, consumer is also slightly looking good in terms of discretionary side. The pickup is green shoots are visible. We have not yet included in the list of the earning growth driver even chemical. The green shoots are pretty much visible.
We have had some exposure. We are slowly increasing the exposure as and when it is needed. Absolute green shoots are visible, but not all across. It is very selective across selective chemicals. So that's why we have not included them as well in this. So yeah, that's all from my side. Let's start with the Q&A, please. Anybody who has a question can put in a Q&A box, and I will try my best to answer it. So yeah, so first question is this an investment seminar or some political party manifesto deflation seminar? I am very sorry if I hurt anyone, but the point is that politicians makes the policies, and that policies are for the country, not for you and me. And the implication on the economy is absolutely required as a learned investor to look at. And I need to explain you the different scenarios, how it is going to play out, and if it plays out, what could be the probable outcome and what are our preparedness. We are absolutely not in the game of favoring or projecting or promoting anything. We are purely discussing investments and nothing else. So let me be very loud and clear about it. So I'm skipping the stock specific queries. There is one question. Do you trust opinion poll? As I said earlier, we just follow the variety of platforms, but politics is totally unpredictable. And the last 3 state elections are the classic example of that. So we should actually not trust anything and probably wait for the actual outcome. And this webinar was just an effort to explain things in detail, that how and what preparedness we have. So yeah, that's all. What is the minimum investment required to get into PMS? Sir or ma'am, it is 50 lakh rupees minimum investment requirement to get into the PMS. What is the expectation from the new government stock market perspective? We always want a stable tax regime from the stock market perspective. So LTCG or STCG should not be tinkered upon. There should be stable policy framework in terms of economic growth and overall socio-economic development. And it should be lucrative from the investor's point of view. Our market should be respected well. So that's all we expect from any government who comes into power. Can PMS be availed with 25 lakh rupees? No. PMS can be availed with 50 lakh rupees, but you can bifurcate the 50 lakh into 2 different investment approach, let's say all weather or diversified or business cycle. But you have to give initial 50 lakh rupees. What about the FMCG sector? Sir, FMCG sector is going through a very dull phase. There is absolutely low volume growth. And very benign earning growth. So it's a catch between growth and valuation. So valuations were very expensive a couple of years ago. There has been a consistent derating because there is no supportive earning growth. But still on ground, things are not looking that great. The volume growth doesn't look like going beyond 3-4% as of now with the present situation on ground. With some policy changes, the things might change. So for example, if it is too much of free money circulation and there is a bit of the inflation, in that case, the FMCG sector gets a flavor. So we need to see what could be the policy outcome post-election. Yes,
people are asking that, do you have the recording? We always publish recording for the benefit of our investors, and our team shared. Kindly get in touch with the respective relationship manager. What is the impact? What impact is expected on the market? Looking at the global scenario of the markets and conflict around the world, that is what is I mentioned, that even if it's a thumping victory, our market can be spooked by the global instability. So there's been a lot of uncertainty on the growth per se, be it European countries, or even the USA, the major country, major democracy, where the elections are likely to be there in around November. There has been a very high sticky inflation, I would say. When I say very high, on a high base, the inflation is still not surrendering. It's pretty much sticky. So Fed is not in a hurry to do the rate cuts. So it is getting postponed. US is likely to have the issues of delaying in the rate cut, number one, and also the election is on head. Europe is also struggling. China per se has started recovering. The economic data has also started coming good. The recent numbers are very encouraging, and the China Composite Index has also delivered the stock market point of view after long underperformance. It has delivered around 16-17% return from February onwards. So global things are pretty much in mess. There's been a war all across different regions, and we have to very carefully and minutely look at the situation and act. But eventually, all these things historically have always given us excellent opportunity to participate into the market. So any sort of a market volatility because of these global things should be captured by us as an investor. We did excellently well during the Russia-Ukraine war, and the portfolio composition actually got changed dramatically during that time, and we have been immensely benefited out of that. So we are closely watching the global situation. If I give you 1 crore now, would you recommend a new investor to put money in the market now, given its all-time high? Sir, markets are always all-time high since last 2-3 years, and हमने हर high level पे पैसा लिया है और हमने कभी भी timing नहीं किया है. So we suggest that whatever money you give, keeping the cash level at the whatever, जो भी 8%, 7%, जो भी cash level हमारा रहता है, scheme wise, the approach wise, वो रख के हम invest कर देते हैं. We don't time it. If you have deep pockets, you can give more money during the correction, or probably if you have a deep pockets, you can wait for market to correct. So दोनों तरह से हो सकता है. So हमने तो कभी टाइम नहीं किया है, because हमारा ऐसा मानना है कि अर्निंग्स को देखो, बाकी सब बाई प्रोडक्ट आ जाता है. Considering a low turnaround in Bihar in the first phase, do you think the history of 2004 is on card? If so, it will be a knee-jerk reaction for a large time frame. सर, बहुत प्रेडिक्ट करना मुश्किल है इलेक्शन को, और ये जो लो टर्न अराउंड एक स्टेट का बात कर रहे हैं, इट माइट बी कंपनसेटेड फ्रॉम अनदर स्टेट. सो लेट्स नॉट गो इन अ फुल फ्लेज assumption as of now. But yes, एक चीज है कि नीजक रिएक्शन अगर कोई चेंज होता है 2004 जैसा तो आएगा, लेकिन 2004 में जिसने वो नीजक रिएक्शन में लोअर सर्किट में माल बेचा था, उनका अगर आप कोई इन्वेस्टर को जानते हो तो पूछिएगा कि कितना बड़ा रिग्रेट हुआ था. सिमिलरली बहुत ज्यादा एक्साइट होके इलेक्शन वाले दिन पे 2009 में जिसने ले लिया था, उसको भी काफी अंडर परफॉर्मेंस आया था 1-2 साल, बिकॉज उन्होंने वैसे सेक्टर्स में एक्सपोजर लिया था जो चला ही नहीं. तो मार्केट है, मार्केट अपना काम करेगा. आपको बस फेथ होना चाहिए इकोनॉमी पे और सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पे. मुझे नहीं लगता है कि लॉन्गर टर्म में ये सारी चीजें मैटर करती है. इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना. व्हाट इज योर व्यू ऑन अ केमिकल सेक्टर? Should we expect any more slow quarters? And what is your view on gold and silver? So my view on gold and silver is constructive. We are already in the money in the case of gold to the extent of, I think, 8-10%, and we are still invested.
Chemical is slowly coming out of the woods. There are few green shoots visible, and clearly मुझे ऐसा लगता है कि केस टू केस बेसिस पे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा, because every chemical has a different demand supply equation. There are few pockets which are still likely to languish, and a couple of quarters recovery is still there, but there are few pockets where the recovery is pretty much visible, and the market has already started looking at them. What is your view on US market considering election in November? Our approach on the Indian market is known to all of you. Our approach on US market is also known to me beyond a point, because we don't track it very closely. But I can tell you one thing, that the election जब भी होता है, volatility आती ही आती है. The US market will have to look at two parameters. One is the election outcome, and second is the Fed action, because the inflation is pretty sticky over there. Numbers are actually job data या जो भी inflation prints है वो काफी elevated अभी भी आ रहा है. आपका जो US का 10 year जो है वो अभी 3.8 तक नीचे गया था. It is again back to 4.65, 4.7. So clearly, Fed is not in hurry to raise the interest rate. Cut the interest rate immediately. So we have to see the US market in that context. My view is that it is likely to see a lot of volatility in this calendar year 24. So brace for it. If you have invested into the US market, brace for very, very high volatility. Effect of war of Israel and Iran on our market. I don't think that beyond a point it has some impact. Like, the crude goes up, but एक चीज बहुत clear है कि जब crude prices बहुत ज्यादा चल जाते हैं because of war, तो टूटते भी ऐसे ही है, because ultimately it's a demand supply which comes into play. And crude में जब भी भाव ऊपर जाते हैं, आपके immediate producers जो है, जिसको एक economic point के ऊपर product भाव जाता है तो profitability आ जाता है. So they increase the supply, and also demand starts collapsing with the higher crude oil prices. So back to square हो जाता है. So सिर्फ crude का ही एक टेंशन रहेगा. बाकी कोई मेजर डायरेक्टली इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, और उससे कोई इंडियन मार्केट में बियॉन्ड पॉइंट बियॉन्ड सेंटिमेंटल कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा. योर टारगेट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूरिंग नेक्स्ट धनतेरस एंड दिवाली. सर इतना स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने गोल्ड इसलिए लिया था. देयर आर 3-4 रीजन फॉर दैट. वन इज दैट द इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी ग्लोबली. So high inflation means gold is one of the pocket to look at. Number two, the war and the likely situation which is there is gold is hedge against that. Number three, globally major central banks are reducing the allocation towards US dollar and gradually shifting it to the gold. The pie of the gold in overall reserve is very, very abysmal. It's less than a single digit. A low part of the single digit. So they all are ramping up their gold reserves, and hence the sustained demand. So these are the few points. And also in case of any political outcome, and if the Indian currency depreciates because of that, the gold is again hedged against that. So these are the few points जिसको consider करके हमने लिया हुआ है. And we are still constructive, and we want to continue holding it for some time. What is the minimum SIP amount? सर आप जनरली हम एनकरेज करते हैं कि 2 लाख रुपया करो तो क्या पूरा पोर्टफोलियो में अच्छे से डिवाइड हो जाए. बट अगर आपका वो होराइजन नहीं है तो आप क्वार्टरली 3 लाख रुपीस भी कर सकते हैं. सो यू कैन डू क्वार्टरली SIP, यू कैन डू मंथली SIP. What will it be better to invest only after election result? I would not do that if I am at your place, because historically markets, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो कि आपके पास 100 रुपया है और आपको लगता है कि आपको अंदर से डर है, तो थोड़ा अपने पास रख के बाकी हमको दीजिए, और फिर जब करेक्ट होता है तो और डालिए. बट 100% कैश पे बैठना और इलेक्शन आउटकम का वेट करना, मैं ये नहीं करता. So I don't encourage you to take that bold call.
because underlying मैंने आपको जो बताया, economy is doing very good, earnings are also looking very good, decent return अभी भी बन सकते हैं, subject to global stability, subject to election outcome. लेकिन सिर्फ उसका वेट करके 100% कैश पे I would not suggest to sit. And कई बार क्या होता है कि we are seeing lot of flows from the other segments of the market, जहाँ पे किसी और जगह पे पैसा पार्क किया है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है. तो people are giving money to us because our approach is very much risk oriented. We respect the risk. We have a very decent proportion of the large, mid, and small. So all this strength is there with us. So we are getting flows based upon that as well. So आप भी अपना existing portfolio composition देखिए, आपका equity exposure क्या है, उसमें किस तरह से क्या risk factors है. You can always look at that shuffling. I want to do SIP in Nifty index for 10 years. Can I expect 15% return? The returns are a byproduct, I'm telling you. आप earnings पे कॉल लीजिए. अगर आपका रियल GDP ग्रोथ 6-7% पे है, इन्फ्लेशन अगर आप 4-5% ऐड कर देते हो तो 11% का नॉमिनल GDP ग्रोथ है. उसके ऊपर कॉर्पोरेट इंडिया अगर 2-3% स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस कर देती है तो 12-13% अर्निंग ग्रोथ है. तो अगर री रेटिंग नहीं भी होता है तो भी 12-13% तो रिटर्न निफ्टी दे ही सकता है बेस्ड अपॉन दिस एजम्पशंस. नाउ अगर रियल जीडीपी ग्रोथ ही 3-4% पे जाता है तो पूरा इक्वेशन बदल जाता है. लेकिन इंडिया इज अ वेरी इन अ डेवलपमेंट स्टेज, इट्स अ ग्रोइंग कंट्री. सो अंडर दैट एजम्पशन अच्छा डिसेंट रिटर्न्स आपके निफ्टी एसआईपीज में भी बन सकता है. और अगर आप करना चाहते हो तो कभी भी कोई भी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो. उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी एट एनी टाइम इज गुड. Will two clients investing in the same scheme having a different portfolio size, let's say 50 lakh and 5 crore, तो उनके portfolio composition different होंगे? नहीं, we have more or less the same portfolio for all our clients. Yeah. And that's why the scheme level TWRR is also more or less same for most of the clients. So we want to give a uniform experience to all our investors. How much I get after 2 years if I invest in 1 crore in January 24 approximately? मैम, अगर मुझे सच में मालूम होता ना तो मैं ये वेबिनार ही नहीं करता आपके सामने. सो अब मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे रिटर्न्स हिस्टोरिकली दिखाए हैं. और अभी मैंने आपका किसी को आंसर किया था निफ्टी का कि अर्निंग्स इतना है तो अर्निंग ग्रोथ के बेसिस पे इतना इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ आता है, तो रिटर्न्स ऑन एन एवरेज इतने बने हैं. बट कोई भी कमिटमेंट करना या कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना जो आपके हाथ में नहीं है, वो करना नहीं चाहिए. But our endeavor is very clear. Net of fees and charges, we want to generate return better than benchmark consistently. That's it. Looking at the metal prices increase globally, do you think it's the right time to be invested in equities with maximum allocation? See, metal cycle has started upward journey. Clearly, copper, aluminum, zinc, are indicating that China is likely to turn around. And दूसरा ये सब चीजें कि जैसे कॉपर फॉर एग्जांपल, तो उसका इंक्रीमेंटल यूज बहुत बढ़ गया है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन विंड पावर और इन सोलर और अदर एप्लीकेशंस. सो और ऑयल जैसा कॉपर में नहीं है कि भाई ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो शेल गैस प्रोड्यूसर्स या फिर दूसरे ऑयल फील्ड्स रातों रात अपनी दुकान खोल के वापस प्रोडक्शन चालू कर देते हैं. यहाँ पे कॉपर माइन को चालू होने में सालों लग जाते हैं. और
नई माइन डेवलप करके चालू होने में भी मल्टीपल ईयर्स लग जाते हैं। तो जब भी आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, इमीडिएटली सप्लाई उसको पुश करने, मैच करने के लिए नहीं आ पाता है। सो यहाँ पे वाइस वर्सा भी होता है कि जब सप्लाई आता है तो इतना जोर से आता है क्योंकि सब कैपेक्स करते हैं, माइंस नए लगाते हैं, चालू करते हैं, और फाइनली जब प्रोडक्शन आता है और डिमांड कोलैप्स होता है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो ये साइक्लिकल सेक्टर है, लेकिन अभी मेटल क्लियरली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिख रहा है। सो या दैट इज फॉर द मेटल। Roadmap for 2047 is ready. How do you see this for the bright future of our बाजार? अगर हमको विकसित भारत का 2041 का जो रोड मैप है, अगर गवर्नमेंट जेन्युइनली उसको फॉलो करती है और हम विकसित भारत का 50% भी जो ड्रीम है उसको अचीव करते हैं, तो हमारे मार्केट में बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट होने वाला है। बिकॉज हमारा पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम इज जस्ट $24,500, जो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। हमारा मीडियन एज भी 29 ईयर्स है, जो काफी कंड्यूसिव और सपोर्टिव है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की सिचुएशन बहुत अच्छी है। बैंक अभी खुल के लोन देना जस्ट चालू किए हैं। सब कुछ बेस्ट है। सो स्टेज इज रेडी। कंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज विल चेंज द मार्केट डायनेमिक्स इन द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स। सो अगर हम इसी तरह से मिलते रहे, तो अगर विकसित भारत की नींव पे सच में काम हो रहा है, तो 20 ईयर्स डाउन द लाइन आई एम श्योर दैट द इंडियन मार्केट्स कुछ अलग लेवल पे दिखेंगे। और रियर व्यू मिरर में तब भी हम देखेंगे तो यही सोचेंगे कि हमने बराबर जजमेंट लिया था। सो आई डोंट थिंक दैट there is a second doubt about the longevity and the growth perspective of our market. Your view on the semiconductor related business in future. Government has started promoting it. Semiconductor demand is actually increasing. Oil is data is a new oil, and there is a requirement of chips in variety of applications. So India mein couple of business houses have already announced their endeavor to do the sizable capex. उसके प्लांट्स की नींव भी रखी गई है और आउटकम भी आना चालू हो जाएंगे कुछ सालों में। So we are keenly observing that, and our view is very, very positive and constructive for the sector as such. So I think I have largely answered all the queries. मैं आपको एक चीज से आई थिंक अभी कोई क्वेश्चंस ज्यादा बचे नहीं है। मैं आपको बस एक ही चीज वापस बोलना चाहता हूँ। इलेक्शन को एक स्क्रूटिनी इवेंट की तरह जरूर देखेंगे। पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी और स्टाइल भी बदलेंगे, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है, दैट इज द अर्निंग्स और अर्निंग्स बेस्ड रिटर्न्स, वो नहीं बदलेगा। सो आपका कंपोजिशन बदलेगा, लेकिन आउटकम इवेंचुअली over the period of time नहीं बदलेगा। So stay invested, stay focused. This webinar was an attempt to make you aware about the likely scenarios. क्या हमारी strategy है, where are we, how are we doing the risk management, and I'm sure it is very clear to all of you now. Yeah. So Yashvi, I don't think we are left with any more questions. We can conclude the event if you wish. Yes, sir. We can conclude the event. Thank you so much for this informative session, sir. And thanks to everyone who attended. If you would like a recording of this session, please send an email to info@credencewealth.com. And for any further questions, please contact your responsible relationship manager or sub-broker. Thank you so much, sir.